Hello everyone, this is Vidyasagattas welcoming all of you to Ray Academy. So this video is going to be very informative for you because in this particular video we will discuss about the interstate border disputes and their solutions. Odisha and Andhra Pradesh regarding जहाँ भी current relevant topic रे चालची जो place regarding कोटिया तो आज रो total video रे हमें discuss करिबा so video टी को end पर्यंत देखंतु and like share and subscribe our channel so let's get into the video. First of all, we need to know that how it will you in your pre as well as mains examinations. So I divided this topic in four important parts like the basic concept, the location, original matter of dispute with past provisions, how can a conflict be resolved. So starts with basic points or basic concept. Like as we know that after independence बहुत सारा princely state जो गुड़ी को include हेले with the help of सरदार वल्लभ भाई पटेल जो माने कि पूर्वरु include होगा ପାଇଁ चाहू नथले जो किछि states गुड़ी को linguistic basis रे हो cultural ethnicity कौन से basis रे similarity dissimilarities basis रे हो तो तांको ପାଇଁ specially provision करा गला कि linguistic states गुड़ी को December 1953 रे a state reorganization commission गोटे set up करा गला so that तांकर जहाँ भी linguistic problem थियो बा other provisions थिबो तो सेही regarding से माने judge करे कि तांको गोटे state को balance करके से तारो border dispute को से माने समाधान करबे और reorganization करबे like as you see in the slide like एबे पर्यंत हमरो 11 जो state भितरे जो conflict एबे मध्ये चलीची like हरियाणा उत्तराखंड गुजरात राजस्थान etc but ओडिसा रो मध्ये disputes चलची like West Bengal Jharkhand Chhattisgarh and Andhra Pradesh सहित if you take the example of Odisha आपण माने clearly देखि पातबे slide रे like Odisha तारो जो boundary line like West Bengal Jharkhand Chhattisgarh सहित connected अछि even 14 of 30 districts share border with Andhra Pradesh West Bengal Chhattisgarh and Jharkhand however the dispute over kotia bordering Andhra Pradesh is the only major border conflict then we need to know about the dispute of kotia Odisha and Andhra Pradesh जो locked territorial dispute रही with regarding to कोटिया ग्राम पंचायत ये 1960 रु चली आसी and dispute कोथि पई रही 21 villages in कोटिया ग्राम पंचायत जो कोटिया ग्राम पंचायत रे 21 टी villages अछि ता ऊपर ही dispute चली रही अछि so residents जो माने कोटिया रे अछंती कोटिया रो residents both side रो means both state रो से माने benefits सब पाउछंती लाइक जदी कहबी कि receive benefits from Potangi block in Odisha जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रू ये बेसिकली बिलोंग करे एंड सालेरू इन विजयनगरम ऑफ आंध्र प्रदेश जदि हमें गूगल मैप रे सर्च करछु कोटिया को सो कोटिया रो लोकेशन एबे मध्ये गूगल मैप रे आंध्र प्रदेश ही शो करछि सो जदि हमें देखिबा कोटिया रो जो लोकेशन पर्टिकुलरली आपनकर बॉर्डर साइड रे ही आसुछि आंध्र प्रदेश एंड ओडिसा रो एंड आंध्र प्रदेश जतरा 1953 रे क्लेम कला कि कोटिया गोटे पार्ट बोली सेबेरु ए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही छी सो ये विलेज और ए टॉपिक टी काहे कि एते इंपोर्टेंट कारण रिसेंटली आपण जानथिबे कि ओडिसा रो जतरा इलेक्शन हला पंचायत इलेक्शन तो सेथिरे ए टॉपिक की बहुत जोर दतला कारण आंध्र प्रदेश रो बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स मध्ये कोटिया रे चलछि एंड ओडिसा रो मध्ये वेलफेयर स्कीम्स कोटिया रे चलछि इवन इलेक्शन माहौल ले भी आपनकर आंध्र प्रदेश रो जहाँ भी इलेक्शन टाइम रे डिस्ट्रिक्ट वाइज बा विलेज वाइज इलेक्शन ने मध्ये इंक्लूड कराउछि कोटिया को तो सेति पई ई टॉपिक की जोर दतला सो जदि हमें देखिबा कि कोथि पई बा को मैटर रे ओडिसा एंड आंध्र प्रदेश मध्ये रे डिस्प्यूट चलछि विथ रिगार्डिंग टू कोटिया सो जदि विलेज को हमें इंपोर्टेंस देबा विलेज रे अछंती नियरली 5000 पीपल्स बा पॉपुलेशंस जो हमें कहि परबा नियरली 5000 जोतरे कि कंद ट्राइब जो रहिछि कंद ट्राइबल्स संख्या अधिक रही एंड सेकंड पॉइंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जदि आपण स्क्रीन में देखि पारुछंती लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हाईली आपन को विजिबल होतो जो रेड कलर मार्क रे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश एंड ओडिसा मध्ये जो रेड कलर टी अछि एंड तापरे कोन जोटा कि आपनकर सिक्योरिटी पर्पस पई मध्ये दुईटा स्टेट पई बहुत इंपोर्टेंट प्लेस ही जाउछि देन थर्ड पॉइंट इज रिच रिसोर्सेस लाइक गोल्ड प्लैटिनम मैंगनीज बॉक्साइट ग्राफाइट एंड लाइमस्टोन जोटा कि हाईली इंपोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी भी स्टेट चाहिए कि एई सबु जो रिजर्व गुडी को रही से ता अंडर को आसु बोली यदि करंट स्टेटस को हमें देखिबा ताकू जस्टिफाई करिया पई कि कोटिया ओडिसा रो ही तो ओडिसा क्लेम करतला बा ओडिसा केस फाइल करतले 1980s रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे कि डिमांड करतले कि कोटिया टी ताको जुरिस्डिक्शन अंडर को आसु एंड कोटिया रे थिबा 21 विलेजेस
ओडिसा रो जुरिस्डिक्शन अंडर को आसुची बट सुप्रीम कोर्ट रे थिबा केस टी एबे मध्ये पेंडिंग ही अछि सो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज साइड रे सरिवार नाम नहुनी तो जदि हमें देखिबा प्रोविजंस कोन रहिछि यारो सॉल्यूशंस पई सो बाय द स्टेट देमसेल्फ और बाय द सेंट्रल थ्रू डायलॉग्स स्टेट माने निज निज भितरे अंडरस्टैंडिंग भलो रखी कि ताकू सॉल्व करि परिबे और सेंट्रल एज ए मीडिएटर एंट्री करिकि मध्ये ताकू सॉल्व करि परिबो एंड कैन आल्सो सॉल्वड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 131 आर्टिकल्स विषय जदि आपण माने जाननांती 131 सुप्रीम कोर्ट रो जो आर्टिकल्स रहिछि से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिनोट करे एंड एथिरे आपण स्टेट इंटर स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट भितरे थिबा डिस्प्यूट मध्ये इंक्लूड हुए किंतु जदि हमें देखिबा कि 2006 जो जेतेबेले केस टी आसला सुप्रीम कोर्ट तरफ से माने ऑर्डर देथिले कि स्टेट बाउंड्रीज आर नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 2006 the matter can only be resolved by the parliament and passed a parliament injunction on the disputed areas so basically यार माने होची कि सुप्रीम कोर्ट कड़ाकड़ी निर्देश देथिले कि 2006 परे कि जो केस गुडी को आछी बा इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट्स जो रहउची से तार पूर्ण क्षमता पार्लियामेंट पाखरे रहिबो एवं सुप्रीम कोर्ट रो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो रहिची सेही अंडर रे आसीबो नाही सो नाउ जदि हमें देखिबे कोन सब प्रोविजंस रहिची तारो सॉल्यूशंस पई so Bhartaman Supreme Court and Parliament clearly mention the approach of central government has consistently been that interstate boundary disputes can be resolved only the willing cooperation of state governments concerned that central government work only as facilitator. So basically यार माने होची कि स्टेट गवर्नमेंट रो पूर्ण क्षमता रहिची किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एथि मीडिएट करि परिबो मीडिएटर एठी रहि परिबो एंड तांको भितरे सब बुझामणा क्रिएट करि परिबो सो दीटा पार्ट को आपनकर बेसिकली यार सॉल्यूशन बा सॉल्व करिवार क्षमता रहिछि जोटा कि होछि स्टेट एंड स्टेट भितरे एंड अनदर होछि पार्लियामेंट सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ए हिसाब रे आपनकर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आसीबर चांसेस रहउछि जोथरे कि आपनकर एसआरसी एंड आर्टिकल 131 रो आपनकर प्रीलिम पई इंपोर्टेंट रहउछि एंड टोटल आपनकर जो डिस्कशन टी रहला सी आपनकर पई हाईली इंपोर्टेंट रहउछि आपनकर मेंस एग्जामिनेशन पई सो थैंक यू